Starting off with the transport of water now. Now that we have discussed the different functions of the plant structures, the structure of the leaf, now we'll talk about how is the water transported. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से सबसे पहली चीज ज़हन में आती है द जाइलम. ठीक है. एंड वी नो कि वाटर एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, वो भी मेरे जहन में आ रहा है कि इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट्स. एंड व्हेन द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट्स इट हैज टू ट्रेवल अप टू वेयर द लीव्स. और फिर लीव्स उसने बाहर ट्रांसपायर भी करना है. So figure 7.13 outlines the pathway taken by water as it is transported through a plant. In order to understand the transport mechanism, you need to understand that water always moves from a region of higher water potential to a region of a lower water potential, as explained in chapter 4 as well. क्योंकि सारा हम water की transport की बात करें, so it is all gonna be based on almost what osmosis. Movement of substances across the membrane and the movement of water through the plant is driven by evaporation from the leaves. ड्राइव कौन कर रहा है इस मूवमेंट को कि यार नीचे से और एब्जॉर्ब करो पानी? वो है ट्रांसपरेशन. ट्रांसपरेशन प्लांट से पानी को ले जाती है दूर एवेपोरेट करके. तो नीड पता लगती है, इसलिए नीचे से और आता है. अगर ट्रांसपरेशन ना होती तो और क्या पानी एब्जॉर्ब होता प्लांट के अंदर? नहीं होता. और ना ही फिर ट्रांसपोर्ट होती, क्योंकि पानी लीफ प्लांट के अंदर ही अंदर रहता है. So the energy of the sun causes water to evaporate from the leaves, which is a process called transpiration. This reduces the water potential in the leaves and sets up a water potential gradient throughout the plant. Water moves down this concentration gradient from soil into the plant, क्योंकि अंदर पानी के less concentration और बाहर soil में there's a higher concentration of water. So water then moves across the root into the xylem tissue in the center of the root. Once inside the xylem, the water moves upwards through the root to the stem and from there into the leaves. रूट से स्टेम में, स्टेम से लीव्स के अंदर. सो सबसे पहले हमने सारा आउटलाइन करें. ठीक है, हमने ये एक एक प्रोसेस जो है ना दैट यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर. वी आर फर्स्ट गोइंग टू से हमने पहले कौन सा पढ़ना, फ्रॉम द लीफ. हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे लीफ से पानी कैसे जाता है. फिर हम देखेंगे एयर स्पेसेस में कैसे जाता है. फिर हम देखेंगे जाइलम टू लीफ कैसे आता है. फिर हम देखेंगे जाइलम में कैसे जाता है. उसके बाद आपके पास जो वाटर रूट हेयर सेल से जाइलम में कैसे जाता है. एंड देन सॉइल से रूट हेयर के अंदर कैसे जाता है. सो पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होना शुरू होगा? सॉइल से रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर से जाइलम में जाएगा, जाइलम से जाइलम टिश्यू में जाएगा, जाइलम टिश्यू से और ऊपर जाके लीफ में एंटर होगा, लीफ से वो उसके अपने एयर स्पेसेस में जाएगा, और एयर स्पेसेस से बाहर इज गोना गो इनटू द एटमॉस्फेयर. So starting off with the movement of water from the leaf to the atmosphere, that is what we call as transpiration. And we can see that figure 7.8, 7.9, and 7.14 show the structure of a dicotyledonous leaf, and the cells inside the leaf have many air spaces around them. The walls of the mesophyll cells are always wet, and some of the water evaporates into the air spaces as well. So the air inside the leaf is usually saturated with water vapor. The air inside the leaf has direct contact with the air outside the leaf through small pores called stomata, and there is usually a water potential gradient between the air inside the leaf and the air outside as well. तो water हमेशा high से low concentration gradient के ऊपर is going to diffuse out of. ठीक है, we call this transpiration क्योंकि leaf में there's a higher water potential, atmosphere में there's a low water potential. So this is how the transpiration is going to take place through the stomata. Now the stomata are open during the day and they are closed during the night. So most of the transpiration is taking place during the day as well. Transpiration is the loss of water vapor from the plant to its environment, and it mostly takes place through the stomata in the leaves. Mesophyll, on the other hand, is the region of a leaf between upper and lower epidermis in dicotyledonous plants. The mesophyll has an upper palisade layer and a lower mesophyll layer. The palisade mesophyll cells are column shaped and forms the main फोटोसिंथेटिक लेयर. यहाँ पे वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और उनसे नीचे वाली लेयर फिर आपके पास आते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स दैट हैव लार्ज एयर स्पेसेस. तो मेसोफिल दो टाइप्स के हैं, एक पेलिसेड है और एक स्पॉन्जी मेसोफिल. स्टोमेटा आर अ पोर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, और ये लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं, नॉट द अपर एपिडर्मिस. ठीक है, जो आपके लीफ का अपर एपिडर्मिस है वहां पे क्यूटिकल वगैरह होंगे. लोअर एपिडर्मिस साइड पे वी हैव द स्टोमेटास प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, and they are very much needed and efficient for your gas exchange system as well. So here you can see this is your upper epidermis. ठीक है, upper epidermis पे नहीं है stomata, lower epidermis के ऊपर लगी हुई है, ये देखें, these are the stomatas. जो अपर एपिडर्मिस के पास लेयर है उसको हम कहते हैं पेलिसेड मेसोफिल सेल, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन वेयर द सनलाइट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. और जो लोअर एपिडर्मिस के पास लेयर है उसको हम कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल.
So palisade layers are so the mesophyll layers are divided into two parts. The first one is the palisade layer near the upper epidermis, and the second layer, the below one, is near the lower epidermis, which is known as the spongy mesophyll layer. Got it? Yes. ठीक है, ये देखो, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर अपर एपिडर्मिस, ये आपके हैं वो पेलिसेड मेसोफिल सेल्स, दीज आर योर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, दिस इज योर लोअर एपिडर्मिस. पेलिसेड मेसोफिल सेल्स नियर द अपर एपिडर्मिस, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स नियर द लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में ही वो होते हैं. क्योंकि जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, लेट्स से आपके फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? In palisade. ठीक है, उन्होंने क्या गैस प्रोड्यूस करनी है? ऑक्सीजन. यूज उन्होंने कौन सी की थी? कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन दे प्रोड्यूस Organized. ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन पेलिसेड मेसोफिल सेल से डिफ्यूज आउट होके कहाँ आ जाएगी? इन दी एयर स्पेसेस बिटवीन द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, यहाँ से फिर उसने एस्केप कर जाना है. एंड दैट इज व्हाई वी से स्टोमेटा से सिर्फ ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर नहीं होता, इट्स ऑल्सो एन गैशियस एक्सचेंज. ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज भी करेगा. Water vapor diffuses from the airspace through an open stomata, which is a process called transpiration. It is carried away from the leaf surface by air movement, and this reduces water potential inside the leaf. Water evaporates from a mesophyll cell into the airspace, and it moves out of the mesophyll cell into the cell wall as well. Water leaves a xylem vessel through a small channel called a pit, and it may enter a mesophyll cell or stay in the cell wall of a mesophyll cell as well. Water moves up the xylem vessels to replace the water lost from the leaf. अब ट्रांसपिरेशन जब हुई है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहाँ हो गई? लीफ से हो गई. अब कोई वजह है जब ट्रांसपिरेशन लीफ से होगी, अभी जाइलम को एक मैसेज आएगा कि यार पानी और चाहिए लीफ को, क्योंकि लीफ से पानी निकल चुका है. जाइलम को भी और पानी चाहिए, वो जाइलम को और पानी चाहिए, तो रूट तक भी मैसेज आएगा कि भाई जाइलम को पानी चाहिए क्योंकि लीफ को पानी चाहिए. तो ये नीचे से एक नीड आती है कि जब ट्रांसपिरेशन होगी, लीव्स के पास पानी खत्म, लीफ जाइलम को कहेगा और पानी, तो जाइलम रूट्स को कहेगा कि मुझे और पानी दो. Then we have xerophytic plants. Can you tell me what are xerophytes? Xerophytes are Which those take up plants. less water Good. बिल्कुल. जैसे and कौन से lives plants in हैं? dry areas and हम्म, deserts, etc. हम्म. These are the plants that live in places where water is in a short supply. Many xerophytes have evolved special adaptations of the leaves, and they keep water loss down to a minimum. Some examples are already shown here below as well. जैसे आपके पास है, this is the marum grass, Amophilia arenaria, जिनकी एक speciality है, number one, that they can roll up due to the shrinkage of special hinge. They have a waterproof cuticle as well. ठीक है, इनके stomata are only found in the upper epidermis, and they also have hairs that traps the moist layer. Moist layer trap करने की वजह से क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं. और याद रहे, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस कम हो जाता है. फिर इस तरह आप ओपिनिशिया कैक्टस को देखेंगे, इनके फ्लैट एंड फोटोसिंथेटिक स्टेम्स हैं जो कि वाटर स्टोर कर रहे हैं. ये बिल्कुल स्पाइनी लीव्स होते हैं इनके, ठीक है. दे हैव अ लेस सरफेस एरिया एज वेल. गॉट इट? ये इसकी अडाप्टेशंस होगी. इसके बाद वी हैव द नीडल स्पिटका फोर्स, ठीक है, इसके नीडल फॉर्म लीव्स हैं, जिसकी वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है. ठीक है, दे हैव रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ वाटर. एंड सेकेंडली दे हैव वाटर प्रूफ वैक्स लेयर एंड sunken stomata as well. Moreover, we have this Phlomis Italia leaf as well. यहाँ भी tiny hair-like structures and that act as a like marum grass. जैसे बिल्कुल marum grass थे ना, उसी तरह के इनके पास भी hairs होते हैं. Then you have succulent stems as well. Succulent stems जो cactus के अंदर भी होती हैं, they are very good in storing water. ये swollen हो जाती हैं and they can expand as well. तो यहाँ से पता लगता है xerophytes are plants which are adapted to survive in conditions where water is in a short supply. And cuticle is a layer covering and secreted by the epidermis in plants, which is made up of fatty substance called cutin, which helps to provide protection against water loss and infection. Got it? Yeah. Now moving on to the second pathway. पहला pathway हमने क्या पढ़ा? फ्रॉम द लीफ टू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब हमने देखना है कि जो जाइलम वेसल थी, जाइलम वेसल से लीफ में पानी कैसे आया. ठीक है, दिस इज द सेकंड मेथड दैट वी गोइंग टू स्टडी. द फर्स्ट वन वाज फ्रॉम द लीफ टू एटमॉस्फेयर, नाउ द सेकंड वन इज फ्रॉम जाइलम टू द लीफ.
As water evaporates from the cell wall of mesophyll cells, more water is drawn into the walls to replace it. This water can be traced back to xylem vessels in the leaf, and water constantly moves out of these vessels through the unlignified parts of the xylem vessel wall. The water then moves down a water potential gradient from the cell to cell in the leaf along in two possible pathways. सिग्नल कैसे गया? लीव्स ने जब ट्रांसपायरेशन की, लीव्स में आपके पास वाटर पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है, और मतलब आपका जाइलम वेसल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल हाई हो गया था, तो ऑब्वियसली water had to move from a region of higher water potential to a region of low water potential through down the concentration gradient through any of these two possible pathways. सिंपलेस्ट पाथवे होता है कि आपका सिंपल है कि जाइलम सेल्स या पैरेन्काइमा सेल से एक एक गुजर के सीधा सीधा आपका सिंपलेस्ट पाथवे। लेकिन एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है? एपोप्लास्ट पाथवे होता है इज थ्रू द सेल वॉल्स। इट ओनली गोज थ्रू द सेल वॉल्स ऑफ वन सेल टू द अदर सेल, उनकी सेल वॉल्स में से इस तरह करके मूव करके जाएगा। दिस इज नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे। Simplest pathway is the living system of the interconnected protoplast extending through the plant, used as a transport pathway for the movement of water and solutes. Individual protoplasts are connected via plasmodesmata. Cell wall के अलावा जितनी सारी चीजें होती हैं सेल के अंदर, इस द सेल मेम्ब्रेन, द वैक्यूल, द ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल वॉल को छोड़ के जितनी चीजें सारी ना, उन सबको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे क्या और प्लाज्मोडेस्माटा ये होता है, ये जो बीच में इनके होल्स होते हैं कुछ थोड़े थोड़े ना, एक सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल के दरमियान, इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, तो ना एक छोटे छोटे बिटवीन वन सेल वॉल टू द अदर, कैन यू सी, ये पाथवेज होते हैं, वी कॉल दीज प्लाज्मोडेस्माटा. Apoplast pathway, the non-living system of interconnected cell walls extending throughout a plant used as a transport pathway for the movement of water and mineral ions. Xylem contains more than one type of cell, but the ones of particular importance in xylem transport are xylem vessel elements. ये जो xylem है ये किससे बनी हुई? ये बनी हुई है xylem vessel एलिमेंट से, और इनमें कोई वॉल्स वगैरह नहीं होती, दे आर लाइक कंटिन्यूअस कॉलम्स, ठीक है, they're literally forming these continuous columns for continuous flow of water as well. Each vessel elements begins life as a normal plant cell, but later हर चीज होती plants की, हर सेल बनती plant cell ही है, बट बाद में वो स्पेशलाइज होती है ना। कोई स्पेशलाइज हो गया इनटू रूट हेयर सेल, अगर उसमें से इस तरह करके एक हेयर निकल आया, कोई बन जाएगा आपके पास पैलिसेड मेसोफिल सेल, इनमें से जिसके पास क्या आ जाएंगे? ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट। कोई प्लांट सेल में से बन जाते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। कोई फिर ऐसे भी होते हैं जो जाइलम वेसल एलिमेंट्स बन जाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग लिग्निफाइड एलिमेंट्स। तो दीज आर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस ऑफ अ प्लांट सेल, एंड वन ऑफ दो स्पेशलाइजेशन इज अ जाइलम वेसल एलिमेंट। ये स्पेशलाइज कब होते हैं? जब इनमें लिग्निन आ जाते हैं। लिग्निन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस विच इज वाटर प्रूफ, एंड लिग्नेट बिल्ड्स अप अराउंड द सेल एंड द contents of the cell die, leaving completely empty space or lumen inside. The xylem vessel elements are quite elongated and they are lined up end to end. The end walls of the vessel elements then break down completely to form a continuous tube rather than a drain pipe running through the plant. This long non-living tube is a xylem vessel, and it may be up to several meters long, and many of these tubes are found in the xylem as well. Xylem vessel elements, on the other hand, are dead lignified cell found in xylem specialized for transporting water and for support. The ends of the cell break down and join with neighboring elements to form long tubes called xylem vessels, or xylem vessels can, they are dead, empty tubes with lignified walls through which water is transported in the plants, and it is formed by xylem vessel elements lined up end to end as well. And there is no one other further complication in those parts of the original cell walls where groups of plasmodesmata are found. वहां पे नो लिग्निन लेस डाउन, सिर्फ वो पार्ट जहां पे कभी कभार एक प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ठीक है, वहां पे वैसी ही थोड़ी बहुत बस सिक्स वॉल होती हैं, वी कॉल दोज पिट्स. Pits are not just open pores, they still have the original unthickened cell wall containing cellulose. ये बस एक cell link होते हैं that just links with one of the neighboring cells ताकि easily water easy उधर पास हो सके। लेकिन असल में इनकी वॉल सारी कोई बीच में नहीं होती है, वो पोर्स और पिट्स वगैरह होते हैं जिसमें से वाटर एक वेसल एलिमेंट से दूसरे वेसल एलिमेंट से तीसरे वेसल एलिमेंट में जाता जाता है। गॉट इट? Yeah. Because of the strength of the lignin, which is hard to compress or stretch, xylem has the important function of support as well as being a transport tissue. The structural features of xylem vessels are closely related to their functions, as you will also see in the next section. So to summarize,
Xylem vessels are made from cells joined end to end, and their cells are dead. Whereas if we talk about the walls, they are thickened with lignin, and the pits in the walls allow the water in and out of the tubes. अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से हमने पार्ट पढ़ी कि जाइलम से वाटर एयर में कैसे किया था, जाइलम वेसल से लीफ में कैसे आया था। ठीक है, और अब हमने देखना है कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, कि रूट्स ने जाइलम के अंदर कैसे फीड किया था पानी। द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल, अब लीफ से पानी रिमूव हुआ, लीफ से रिमूव होने की वजह से जाइलम से रिमूव हुआ। अब जाइलम के रिमूव होने से रूट्स को सिग्नल जाएगा कि अब जाइलम से ही पानी खत्म हो गया। दिस टेंशन बेसिकली कॉजेज, क्योंकि एक प्रेशर होता है, देयर इज अ थिंग नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वाटर पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तकरीबन एक ही चीज होती है। हाई वाटर पोटेंशियल मींस हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और अगर ऊपर पानी वाटर पोटेंशियल इस एरिया में कम हो जाता है तो रूट्स को सिग्नल जाएगा कि ऊपर लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया है, तो रूट से एक हाई प्रेशर बिल्डअप कर लेता है। Now the vessels are full of water, so just like sucking up water up a straw. If you suck hard on a straw, its walls may collapse and building a high tension that you are creating as well. Xylem vessels भी अगर इतना तेज सक करती ही हैं पानी को, वो भी करती हैं, लेकिन उनको लिग्निफाइड वॉल्स बचा लेती हैं फटने से, टेंशन से, क्योंकि वो प्रेशर को सारा नेगेटिव कर देते हैं। The movement of water and mineral ions up through the xylem vessels is done by mass flow. This means that all of the water molecules plus any dissolved solutes move together at the same speed like water in a river. And this is different from diffusion, where the different types of molecules or ions move at different speeds and direction according to their own diffusion gradients. Mass flow through xylem is helpful by the fact that the water molecules are attracted to each other by hydrogen bonding. अब water move दो तरीकों से कर रहा होता है up the xylem vessels. One of the forces is known as cohesion. कोहेजन होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इतना अच्छा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दीज आर द फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, कि वो एक कंटिन्यूअस लाइन के अंदर ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं। दूसरी फोर्स आपके पास होती है एडहीजन। एडहीजन क्या करती है, एडहीजन इज द वाटर मॉलिक्यूल्स फोर्सेस विद द वॉल्स, ये वाली वॉल्स, वॉल्स के साथ जो उनकी एडहीजिव फोर्सेस होती हैं, दिस इंश्योर्स कि वाटर कंटिन्यूअसली ऊपर एक अनब्रोकन कॉलम के टाइप में मूव करता रहे। इज इट क्लियर? Yeah. So the water molecules are also attracted to the cellulose and the lignin in the walls of xylem vessels, which are hydrophilic. This is called adhesion. So cohesion and adhesion both help to keep the water in the xylem vessel moving as a continuous column. ये word use करना है आपने. So the fact that the cells are dead and empty is an advantage because it means there is no protoplasm to get in the way of transport. If an air bubble forms in the column of water in a vessel, the water stops moving upwards, and this is called an air lock. The small diameter of xylem vessels helps to prevent such breaks from occurring. Also, the pits in the vessel allow water to move out from one vessel to a neighboring vessel and bypass such an airlock as well. Air bubbles के chances भी बहुत कम रह जाते हैं, ब्रेक होने के चांसेस, फटने होने के चांसेस, बिकॉज लिग्निफाइड वॉल्स, कोहेजन, एडिशन, इतनी चीजें हैं जो ये चीजें प्रिवेंट भी आपके पास कर सकती हैं, क्योंकि इवन द पिट्स हैं, पिट्स में से एक वेसल एलिमेंट से दूसरे वेसल एलिमेंट में सिर्फ वाटर ही जाएगा। Air bubbles can also not pass through those pits. Remember, there is a cellulose cell wall in the pit as well, and pits are also important because they allow water to move in and out of the xylem vessels from and to surrounding living cells as well. So, those lignified cell walls and thickening of cell walls provide high pressure कि maintain रह सके आपके पास. Now, how does the root hair send the water to xylem vessels? Root hair cells का तो हमें already पता है that due to their high surface area, they can easily absorb water and mineral ions from the surroundings. और फिर उन्होंने कुछ bunch of colon काइमा सेल से गुजरते गुजरते या पेरेन काइमा सेल से गुजरते गुजरते फिर फाइनली एंटर होना होता है किसमें, जाइलम के अंदर। तो ये वाला जो पाथवे है ना कि रूट हेयर सेल से जाइलम में कैसे जा रहा है पानी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस फोर्थ पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट। Xylem vessels are in the center of the root. अगर आपको इसका क्रॉस सेक्शन याद है, ये बना हुआ बल्कि, ठीक है, दिस इज xylem and these are all phloems. अब xylem is in the center of the room, and unlike the arrangement in stems में तो they are all arranged in a ring and nearer to the outside, right? But over here the water is taken up by the root hairs which are on the outside of the root, growing from the epidermis, and the hairs increase the surface area for the absorption of water. मसला ये है कि ये आपके पास है रूट हेयर का रूट का क्रॉस सेक्शन, ठीक है।
अब आपके पास जो रूट हेयर सेल्स हैं, ठीक है, जैसे ये है, ये रूट हेयर सेल है, रूट हेयर सेल है। इन्होंने पानी तो एब्जॉर्ब किया। क्या आपने सोचा कि यहां तक जाइलम तक कैसे जाएगा? थ्रू पैरेन्काइमा सेल्स। जिन सेल्स की कोई समझ नहीं आ रही थी नहीं क्या है, वो क्या होते हैं? पैरेन्काइमा सेल। ये पूरा एक टिश्यू है ना, दिस होल इज अ टिश्यू मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल। तो हमने बेसिकली ये वाला पार्ट पढ़ना है कि रूट हेयर से लेके जाइलम तक कैसे जाता है। रूट हेयर सेल में तो जाइलम नहीं है ना, इट हैज टू गो फ्रॉम द रूट हेयर इनटू द मिडिल पार्ट नोन एज जाइलम। नाउ ये आपके पास काम कैसे होता है? आफ्टर एंटरिंग द रूट हेयर वाटर क्रॉसेस द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। ये है कॉर्टेक्स जो मैंने ये दिखाया, ये इस पूरे को कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये कॉर्टेक्स सेल्स कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा टाइप। ये कॉर्टेक्स cells of the roots and enters the xylem in the center of the root. It does this because the water potential inside the xylem is lower and the water potential in the root hairs is higher. So therefore, the water moves down a water potential gradient across the root. As also mentioned earlier, the water takes two routes through the cortex, the apoplast pathway and the symplast pathway. Individual molecules can switch randomly from one route to the other at any time, and the cells of the cortex, like all plant cells, are surrounded by cell walls containing several layers of cellulose fibers, which are actually crisscrossing one another. अब आप सोचो जो कॉर्टेक्स से सेल्स हैं, उनमें भी तो सेल वॉल्स हैं। ये जितने भी आपके पास ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो मैंने बनाए हैं, इनके पास भी तो सेल वॉल्स होंगी, और वो भी तो काफी टफ सेलुलोज स्ट्रक्चर होता है। सो वाटर गेट्स सोक इनटू दीज वॉल्स rather than like soaking into and blocking the paper. They move across the root from cell wall to cell wall by an apoplast pathway. Another possibility is for the water to move into the cytoplasm or the vacuole of the cortex cell by osmosis, and then in the neighboring cells through the interconnecting plasmodesmata. Can you tell me कि प्लांट कब मजबूर हो जाता है एपोप्लास्ट पाथवे से सिम्प्लास्ट पाथवे पे मूव करने के लिए? अच्छा खासा वो जब एपोप्लास्ट से जा रहा है, व्हाई डज इट शिफ्ट टू सिम्प्लास्ट पाथवे ऑन द वे? ये ब्लॉक्ड हो जाता है किससे ब्लॉक हो जाता है? कैस्पेरियन से। Good, exactly. ठीक है, so here you can see as well. Apoplast pathway क्या है? Water enters the cell wall, moves through the cell wall to cell wall, and directly from cell wall to cell wall. Symplast pathway enters the cytoplasm, फिर साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में, वैक्यूल से टोनोप्लाज्म में, सेल टू सेल, और फिर प्लाज्मोडेस्माटा से अगले सेल की साइटोप्लाज्म में। क्यों ब्लॉक हो जाता है सेल वॉल से? क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है मेड अप ऑफ सिब्रिन। एक मटेरियल होता है सिबरीन, उससे ये बनी होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो कि ब्लॉक कर देती है एपोप्लास्ट पाथवे को, एंड द वाटर इज मजबूर टू गो थ्रू द सिम्प्लास्ट पाथवे। देन when the water reaches the endodermis, the apoplast pathway is blocked. The endodermis, like the epidermis, is one cell thick and it surrounds the vascular tissue in stems and roots. The cells in the endodermis have a thick waterproof waxy band of suberin in their cell walls, and the band is called the Casparian strip. And it goes right around the cell. It stops the water moving through the apoplast, and the only way water coming across the cortex is now to cross the endodermis through the unthickened parts of the cell wall and follow the simplast pathway. आहिस्ता आहिस्ता होता है कि जब ये एंडोडर्मिस सेल्स ओल्ड होते जाते हैं ना, ये कहाँ से आते हैं? सुब्रिन। जब एज हो जाती है सेल्स की, सुब्रिन डिपॉजिट होने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता उन सेल वॉल्स के अंदर एज वेल। In certain cells called the passage cells, no water can enter the cells. Passage cells still have the Casparian strip, but water can continue to pass using the simplast pathway. And it is thought that this arrangement gives a plant control over what mineral ions pass into its xylem vessels, as everything has to cross the cell surface membranes. Once across the endodermis, the water continues to move down the water potential gradient towards the xylem vessels through either the simplast or apoplast pathway. Water moves into the xylem vessels through the pits or non-lignified regions of their cell wall. तो जाहिर सी बात है, फिर जैसे सिम्प्लास्ट होता है उसी तरह से आपके पास हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने क्या क्या पढ़ लिया? ठीक है, दिस वाज इट। फिर यहाँ से यहाँ, फिर रूट्स, और अब क्या पढ़ना है? वी हैव डन कि how does the water leave the leaf. We have done how does the water enter the leaf from xylem. We have done कैसे आपके पास टिश्यू से जाइलम के अंदर लोड हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि रूट से जाइलम तक कैसे जाते हैं। अब हमने देखने की जो सॉइल से रूट्स में कैसे किया था। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हियर, दिस विल बी आवर लास्ट पार्ट. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ वेरी यंग रूट.
इन फ्रंट ऑफ यू, और इसके ऊपर भी रूट हेयर्स नजर आ रहे हैं, एंड इट इज अ ग्रोइंग थ्रू द सॉइल. द टिप ऑफ द रूट इज कवर्ड बाय अ टफ प्रोटेक्टिव रूट कैप which is not permeable to water. However, just behind the tip, you can see many fine hair-like structures, and these are the root hairs. They are extensions of some of the epidermal cells of the root. They reach into spaces between the soil particles where they absorb the water and mineral ions. Water moves into the root hairs by osmosis down the water potential gradient, although soil water contains some inorganic ions in the solution, and it is a relatively dilute solution and so has a relatively higher water potential as well. However, the cytoplasm and the cell sap inside the roots have considerable quantities of inorganic ions. अब मसला ये कि जो वाटर है, वाटर तो इजीली आ जाता है कैसे? क्योंकि जो आपके पास रूट हेयर सेल्स हैं, they have a lower water potential. Soil में there is a higher water potential. तो ये तो down the concentration gradient आ रहा है. बात जब आयंस की आती है, आयंस प्लांट्स के अंदर ना ऑलरेडी होते हैं. आपके क्लोरोफिल भी मैग्नीशियम आयन से बने हैं, आपके रूट में फॉस्फेट आयंस होते हैं, आपकी स्टेम की ग्रोथ के अंदर नाइट्रेट आयंस ऑलरेडी होते हैं. अब हम जब बात करते हैं ना प्लांट की ओवरऑल, या सिर्फ रूट्स की कर लो, उधर ऑलरेडी देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, और सॉइल में देयर इज अ लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सॉइल बहुत कम अरसे के लिए फर्टाइल रहती है. अब अभी भी लेकिन प्लांट को तो चाहिए, हर वक्त चाहिए. तो अब हम जाएंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो जो आयंस की मूवमेंट है दैट हैपन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज रूट हेयर्स में ऑलरेडी बहुत कंसिडरेबल क्वांटिटीज होती हैं. इवन प्रोटीन्स और शुगर्स इतने ज्यादा होते हैं रूट हेयर सेल्स में दैट दे हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल. Water therefore diffuses down this water potential gradient through the partially cell surface membrane, but a large number of root hair cells also provide a large surface area in contact with the soil, increasing the rate which water can be absorbed as well. लेकिन जो mineral ions हैं, they are absorbed actively. Got it? Yes. Good.